Hello students. So let's start the chapter the living world. Okay. The last class what we have studied in this chapter, we had talked about the criteria of the living things. Okay. That how would you differentiate between the living things and the non-living things. Understood? In which we will study the 6 features in which you can classify that a particular thing, particular organism is living or particular is non-living. Okay. Do you remember all those organisms? On the basis of growth, on the basis of reproduction, on the basis of metabolism, on the basis of consciousness, we can say that the particular is, or on the basis of cellular organization, we can say that the organism is living or non-living. Okay. Now, apart from this, we will now start the next topic is biodiversity. Okay. Biodiversity. What do you understand by term bio? Bio means होता है bio. It means living. Okay. And diversity means the vast area in which various organisms live. Okay. So biodiversity, it means the type of organism or number of species in a particular area. In a particular area, the type of organisms or a number of the species live, they are known as biodiversity. Very important in understanding the term biodiversity. It is the occurrence of variety of life forms differing in their morphology, differing in their size, color, anatomy, habitats and habits, and each different kind of plant, animal or microorganisms, they represent the species. So biodiversity means the type of the different type of organisms or the number of the species living in a particular area is known as biodiversity. On earth, 1.7 to 1.8 million people are 1.7 to 1.8 million organisms are there. Okay, this is the most important questions which you asked in the NEET, the range they ask. Okay, in the MCQs they give various range, so you have to mug up that 1.7 to 1.8 million. However, currently there are 1.7 to 1.8 living organisms are known. Understood? See, I will explaining this with this two pie chart. See this pie chart and see this pie chart. Which have the largest number of the biodiversity? In which the largest number of the biodiversity, A or B? Of course, the answer is B. It has greater biodiversity. It has greater biodiversity as compared to A. Now many students thought that why here the number of individuals is more and in this pie chart number of individual is less, then why the biodiversity is greater here? The answer is, dear ones, we are not counting the number of individual. Biodiversity doesn't mean that the number of individual count. Biodiversity means the type of the organism, the number of species. See, here the number of species only two. One I marked with plus and another with I marked with that green marker, that brown. So here the number of species is only two. Only two number of species. Here you see one species, two species, three species. So number of species is here 3. So it has greater biodiversity as compared to this because number of species or a type of organism is more in the case of B pie chart. Understood why B is greater biodiversity? Means we don't have to count the number of the individuals. We have to count the number of the species in this pie chart. So this means the biodiversity. Next is your nomenclature. See, अब 1.5 to 1.7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो सभी को पहचानना, सभी के नाम याद रखना मतलब ये बहुत इजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. सपोज मेरा नाम पूजा है, ठीक है. दिस इज माय नेम. मेरे घर वाले मुझे कोई स्वीटी कहता है, कोई कुछ कहता है. ओके, डिफरेंट निकनेम्स हैं मेरे घर के. तो जो निकनेम्स हैं, दीज आर द लोकल नेम. और ये जो मेरा पर्टिकुलर नेम है पूजा आनंद, दैट इज नोन बाय एवरीवन. सो जो एक नाम जो यूनिवर्सली सबको पता है कि ये इसी का नाम है, वही नोमेनक्लेचर है. ठीक है. सो नोमेनक्लेचर क्या होता है एक्चुअली? नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that particular organism is known by the same name all over the world. This process is known as nomenclature. Means any organism, if a organism is known by the one name all over the world, this is known as a nomenclature.
सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, किसी रीजन में उसे किसी और के नाम से जाना जाता है, मान लो पंजाब में कुछ और कहते होंगे, छत्तीसगढ़ में कुछ और कहते हैं, आपके महाराष्ट्र में कुछ और कहते हैं, तो इससे डिफिकल्टी होती है कि विच ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट्स व्हाई दिस नोमेनक्लेचर इज इन्वेंटेड बाय द कार्लस लिनियस. कार्लस लिनियस ने डिस्कवर्ड इस पॉइंट को टर्म किया नोमेनक्लेचर. ठीक है, नोमेनक्लेचर मींस होता है वी आर गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स and this name is universally one, only one name is there. So this name is same all over the world. ठीक है, each organism has only one name which is same all over the world. That is nomenclature. Definition is very easy. Process of standardizing the name of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is known as nomenclature. Carlos Linnaeus. Carlos Linnaeus is a scientist who coined the term also binomial nomenclature. ठीक है, Carlos Linnaeus, a scientist, also coined the term nomenclature and also coined the term binomial nomenclature. See, binomial, as the name suggests, bi means two. ठीक है, binomial nomenclature consists of two parts. One is your, each name has two components, that is generic name and another one is the specific epithet. Okay, so binomial nomenclature क्या होता है बच्चों? It is the universally accepted principles to provide scientific name to the any organism. अगर हम किसी organism को scientific names देते हैं, so that is your binomial nomenclature and this had two components, generic and specific. The naming system किसने दिया था? Carolus Linnaeus ने. Okay, for example, mango. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो. दिस मैंगो इज द लोकल नेम. ठीक है, बट द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज मैंजिफेरा इंडिका. दिस मैंजिफेरा इंडिका इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तुम कहीं भी चले जाओ, मैंजिफेरा इंडिका मतलब मैंगो ही होता है, इसका मतलब एप्पल या कोई अदर फ्रूट नहीं होगा. मैंजिफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम विच कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म मैंगो. ओके, नाउ द मैंजिफेरा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस नेम इज नोन एज जीनस and the another part of this name is known as species. That's why binomial nomenclature consists of two parts. One is genera and another one is a species. And these both genera and the species, they are written in a separate. Okay, we will understand the rules. So you just know कि this Mangifera indica हो गया human being. Human being का scientific name है Homo sapiens. What it is? Homo sapiens. So Homo sapiens, the first letter, the first word is your generic name. Okay, and the second one is sapiens is your specific epithet. So these are the binomial nomenclature. There are many more. Now अब हर एक साइंटिस्ट को या फिर इतने सारे ऑर्गेनिज्म है 1.7 to 1.8 मिलियन, सारे साइंटिफिक नेम्स हमें याद करना पॉसिबल नहीं है. सपोज किसी और साइंटिस्ट ने भी किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया और उसने सोचा कि इस ऑर्गेनिज्म का नाम हम रख देते हैं मैंजिफेरा इंडिका. तो फिर भाई अब मैंजिफेरा इंडिका तो ऑलरेडी एक नेम रखा हुआ है, लेकिन उस साइंटिस्ट को कैसे पता चलेगा कि ये है? अब उस साइंटिस्ट को सारे के सारे याद तो है नहीं, साइंटिस्ट ने बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम. तो इसी के लिए दो कम्युनिटी बनाई गई है. वन इज नोन एज ICBN एंड अनदर वन इज नोन एज ICZN. ओके, लेट्स स्टडी व्हाट इज ICBN. What is ICBN? ICBN means for plants. Scientific names are based on International Code of Botanical Nomenclature. ठीक है, अगर हमें प्लांट्स के बारे में कोई भी डेटा कलेक्ट करनी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, तो साइंटिस्ट विल रेफर दिस कम्युनिटी ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. बॉटनिकल मीन्स वी आर डीलिंग विद द प्लांट्स. अगर किसी साइंटिस्ट ने प्लांट ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है और वो उसके नोमेनक्लेचर के पहले वो इस कम्युनिटी को रेफर करेगा कि वैसा नाम का कुछ और है कि नहीं, तो उसमें से पता चलेगा कि नहीं, मैंजिफेरा इंडिका ऑलरेडी नेम दे चुका है मैंगो को. देन द साइंटिस्ट विल नॉट गिव दिस नेम टू द अदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसका रूल क्या है? Scientific name is unique for one organism. Next one is ICZN. ICZN for the animals. International Code of your zoological nomenclature. ठीक है, International Code of Zoological Nomenclature. So scientific name ensures that each organism has only one name. Understood? Nomenclature, binomial nomenclature. Now let's comes to the classification.
अब इतने सारे अब ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं तो उन्हें तो क्लासिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के उनके आगे की स्टडी करनी बहुत डिफिकल्ट होगी, क्योंकि जो हमारे बायोडाइवर्सिटी में वास्ट नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है। देयरफॉर अच्छा रुको, बिफोर गोइंग टू क्लासिफिकेशन लेट मी टेल यू सम यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. What are the universal rules of nomenclature? Then we will go to the classification. Now till here you understood बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ. जैसे मैंजीफेरा इंडिका था, मैंजीफेरा इंडिका. ओके, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ योर मैंगो. अंडरस्टूड. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, टू कंपोनेंट्स है, वन इज जेनेरा अनदर इज स्पीसीज. नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग नोमेनक्लेचर. ऐसा तो नहीं साइंटिफिक नेम लिखना है तो लिख दो ऐसे भी करके, हर चीज के रूल्स होते हैं. इसके रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल नंबर 1 ये है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं दे आर जनरली इन लैटिन. They are originated from the Latin. So biological nomenclature are generally in Latin and written in italics. Okay. तो first rules है, इनका origin क्या है? Latin. And they are written in italics. This is the first rule of your naming nomenclature. Second rule is that the first word is known as genus. This first word is known as genus, and the second word is known as species or species epithet. This is your second rule. First rule क्या था? They should be written in italics. Second rule, the first component will be genera, second will be species or species epithet. Both the words in a biological name, when handwritten, they should be separately underlined, as I have underlined. So whenever the botanical name or scientific name is handwritten, they should be separately underlined. Or if it is in printed form, then they should be in italics. Understood? In the italics indicate their what? Latin origin. Now fourth one is that the first one which donating the genera, this starts with the first letter which donates the genera, this starts with capital letter. Okay. And the second one which resemble or which indicate the species, they start with the species ka first letter of species should be in small letter. Understood? So these are the 4 rules. For following these 4 rules, we have to write the botanical name or the scientific name. What are those rules? First, quickly revise. Biological, they are originated from the Latin, written in italics. First was genera, second one is species. Third, it should be separately underlined if it is handwritten. If it is in printed form, it should be in italics. Fourth one, first letter always with the capital letter of genera. And for the species epithet, it should be in the small letter. The first letter will be small. So these are the certain rules of writing the binomial nomenclature. Now next comes to the classification. अब इतने सारे organisms, इतने बिलियन मिलियन organisms हैं, अब इसको क्लासीफाई तो करना ही पड़ेगा, तभी उसकी आगे की स्टडी हो पाएगी. तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? Classification is grouping of the organisms. Okay. Grouping of organisms into different categories on the basis of their observable characters. On the basis of their observable characters, we will group into different classification. This classification we will study in detail in the chapter number 3. So till here you just understand the definition of classification. It is nothing but the grouping of the organisms into different categories on the basis of their observable characters. Details of this classification, types of the classification, natural होते, artificial होते, we will study in detail in the chapter number 3. ठीक है? So classification makes the study of the organisms more convenient. Now next comes to taxonomy. The word taxonomy is used. What does taxonomy means? ठीक है? The taxonomy is the branch of science or branch of the biology that deals with the classification of organisms. So taxonomy क्या होता है? It deals with the classification of the organisms. The process of classification, जो भी आपका classification का process है
on the basis of external structure, internal structure, or on the basis of cell development process, ecological information. ये जो भी आपके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, इनको अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलेंगे तो दे आर टैक्सोनॉमी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज योर सिस्टमैटिक्स. These are the terms which use taxonomy, taxa, taxon. So taxonomy क्या होता है? Which deals with the classification of organisms. और एक taxa word भी आया है आपकी बुक में. Taxa एक scientific term है for these categories. That is known as taxa. Taxa indicates करता है categories at different letters, different levels. Sorry. जैसे plant. Plant एक taxa हो गया. Animals हो गए, mammals हो गए, dogs हो गए, cats हो गए. These are taxa. So these they also represent the categories, but at a different levels. Next is your systematics. Systematics क्या होता है? Systematics. Systematics means systematic arrangement of the organisms, which include identification, which includes nomenclature, and which include classification, is known as systematics. So systematics is the arrangement of the organisms. Systemic arrangement of the organisms, which include identification, which include classification, which include nomenclature. So different kind of organisms and their relationship is known as systematics, which is derived from the Latin word systema, which means that systematic arrangement of the organisms on the basis of their classification, identification, and nomenclature. ठीक है? This systematics natural Carolus Linnaeus has written these books known as Systematic Naturae. Okay, now we will study about the 7 categories. ठीक है, 7 categories था जिसको अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोलते हैं. ठीक है, 7 categories, वो 7 तुम्हारे there are 7 obligate categories and some intermediate categories. कैटेगरीज क्या क्या थे? 7 categories में हमने डिवाइड किया स्पीसीज, जीनस, family, order, class, phylum, and kingdom. These are the 7 categories, which is also known as taxonomical hierarchy. ठीक है, so taxonomical hierarchy क्या है? Step wise arrangement of classification of plants and animals. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को अरेंज करना, स्टेप वाइज अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. सो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी is a rank, it is a level in the hierarchical classification. This is the hierarchical classification of the organism from the species, the genus, the family, the order, class, phylum, kingdom. These all are the 7 categories, which is most important. These are the 7 obligate category, and category is a part of overall taxonomic arrangement. ठीक है, इसे हम taxonomic category भी बोलेंगे, taxonomic hierarchy भी बोलेंगे. So these are the taxonomic hierarchy, species, genus, family, order, and this species जो आपके होते हैं ये बेसिक लेवल है, ये बेसिक यूनिट है आपके हायरार्की क्लासिफिकेशन का या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का. मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है तुम्हारे नीट में, व्हाट आर द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की. Okay, what are the basic unit? So basic unit is species. How species is known as a basic unit? See, there is Panthera leo, Panthera pandus, and Panthera tigris. Okay, see, अगर हम सिर्फ पैंथेरा लिखेंगे, if we will not write leo, pandus or tigris, we write सिर्फ पैंथेरा. Could you identify whether it is tiger, it is leopard, or whether it is pandus? No, you can't identify. So we have to write the species name so that we can identify the species. Without writing the species name, only writing the genera, we cannot identify the organism. That's why species is considered as a basic unit of the classification. Understood? What I have taught about the nomenclature, classification क्या होती है, taxonomic, ये सब definition by heart remember करो. क्लासिफिकेशन की क्या डेफिनेशन है, टैक्सोनॉमी की क्या डेफिनेशन है, टैक्सा क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है, सिस्टेमैटिक क्या होते हैं. सो दिस डेफिनेशंस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन और इन द एमसीक्यू. नेक्स्ट 7 कैटेगरीज वी हैव डिस्कस. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑल दिस 7 कैटेगरीज इन डिटेल. ओके, टिल नाउ यू कीप रिवाइजिंग ऑल दोस थिंग्स whatever I have taught you today in the last class, because see,
11th क्लास का हर एक चैप्टर बहुत ही वास्ट टॉपिक है। एक ही दिन में अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे पूरे बुक चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ फर्स्ट चैप्टर को, लेकिन यो आप लोगों को समझना भी होगा उन चैप्टर्स को अच्छे से। तो मैंने जो फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था अबाउट द योर क्राइटेरिया ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसे अच्छे से स्टडी कीजिए, खुद से अपने नोट्स बनाओ, खुद अपने वर्ड्स में लिखना शुरू करो, ठीक है। वट एवर यू आंसर स्टडी, राइट योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, जस्ट डोंट मग अप फ्रॉम द एनसीईआरटी और डोंट मग अप फ्रॉम माय नोट्स, you just give ideas from the notes or from the books and at last you make your own words, your answer should be in your own words, ठीक है। सेकेंडली आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया अबाउट योर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में आपने बहुत सी आज नई नई टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, नोमेनक्लेचर का नाम पहली बार पढ़ा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा, क्लासिफिकेशन क्या होती है, टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक्स क्या होती है। सो दीज टर्म्स आर न्यू फॉर यू, नाउ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म्स, तो गो थ्रू इट, लर्न द टर्म्स, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल 7 क्लासिफिकेशन सेपरेटली, स्पीसीज क्या होती है, जिनेरा क्या होती है, ऐसे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर बढ़ेंगे किंगडम तक। So till here keep revising and if possible whatever the worksheet I am giving solve it, and if any doubt please ask at my personal number. Thank you.